Saudi Arabia is pausing talks on normalization deal with Israel. Remember, this was the normalization deal that was being brokered in by the United States between Israel and Saudi Arabia and was expected to be a landmark normalization deal to be brokered in by the United States. Remember, it was some time ago that China had already brokered in a deal between Iran and Saudi Arabia, which was expected to be, which was being touted as a historic deal. And now this deal was in the making by the United States between Saudi Arabia and Israel. For more details, Abhishek Jha continues to stay with me. Abhishek, take us through the details. What do we make when what do we make of the situation when we learn that Saudi Arabia has paused talks? Well, the Saudi Arabia and Israel peace or the bilateral improvement of bilateral tie would have, brought in a new era in the Gulf peace process or the prosperity. But sadly, that didn't happen right now, and all the peace talks that Saudi was having with Israel has been stopped right now. We know that in Gulf major countries like UAE, Qatar to some extent, they have already good relationship with Israel. Saudi has been on the other side, and with the Saudi coming into the peace and the bilateral ties in Israel, a lot of geopolitical alignment in the region would have also changed. But with the latest, massacre or the terrorist attack from the Hamas side, Saudi has to take a side of Palestine, and that means that it will not have any talk or any engagement with Israeli until and unless Israeli forces stop at least the current massacre, current counteroffensive that is happening on the Gaza and other locations where the Hamas militants are hiding. And the Saudi also has to show its solidarity with the Muslim world, who are mostly united for the cause of Palestine. So that is the first priority that has taken the national interest of Saudi currently, and having a improved bilateral relationship with Israel can totally wait for now. And this is what Israel is also looking ahead. They are not interested in having more bilateral exchanges or improvement of any other relation. First priority for them is to ensure that every single militant hideout or every single individual who has been involved in the terrorist activity of Hamas is killed, neutralized, or just removed from the region. So this is the priority that has taken center stage in Israel's politics, and Saudi is of course trying to stand and show the solidarity with people of Palestine right now. Absolutely, that was expected out of Riyadh, and perhaps this is also the spillover effect in West Asia that we have been discussing in the past few days here at CNN News 18, the impact of the Israel-Hamas war in West Asia. Thank you so much, Abhishek. Stay safe. We'll keep coming back to you for more inputs. In the meantime, let's also play out the reactions that have been coming in. To begin with, this is the Israel's defense forces. We want civilians not to be affected by the war. We didn't put those civilians there. They are not our enemy. We are not trying to kill or injure any civilians. We are fighting against Hamas. That needs to be abundantly clear. We are fighting and targeting Hamas and its military infrastructure wherever it is. That's where we target it, and we have targeted around the Gaza Strip and in the northern part of the Gaza Strip. रात के 9 बजे हैं और इस वक्त हम लोग तेल अवीव में हैं। इजराइल की आर्थिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है और 24 घंटे ये शहर चमकता है, दमकता है। नाइट लाइफ यहाँ की दुनिया भर में जानी जाती है। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग आते हैं। यहूदी आबादी सबसे अधिक है इजराइल में, और इजराइल के मध्य में है तेल अवीव। अगर कोस्टल पूरे एरिया को देखें तो मध्य में पड़ता है। उत्तर से अगर साउथ की तरफ जाएं तो मध्य में तेल अवीव पड़ता है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं पूरे इजराइल में, तेल अवीव भी उससे अछूता नहीं है। तेल अवीव में भी मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तेल अवीव के सेंटर एरिया में है। रातों भर 24 घंटे, खासकर सुबह 4 बजे तक ये सब सड़कें आम दिनों में लोगों से भरी होती हैं, मस्ती होती है। पब, होटल्स यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अभी किस तरह की स्थिति है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आपको सड़कों पे दिखेंगी, और ये गाड़ियाँ, इन गाड़ियों में ये इमरजेंसी मूवमेंट वाली गाड़ियां हैं ज़्यादातर। कुछ लोग जिन्हें निकलना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारे पब्स मैक्सिमम बंद हैं। आप देख सकते हैं टेक होम की फैसिलिटी कुछ जगह है, जैसे तेल अवीव में ही इंडियन रेस्टोरेंट है, हम वहाँ मौजूद थे, वहाँ टेक होम की फैसिलिटी थी। और इधर हर तरफ, हमारे कैमरा पर्सन आपको हर तरफ, हर बिल्डिंग, ये स्ट्रीट्स भरी रहती है यहाँ।
आम दिनों में जब वॉर का सिचुएशन नहीं होता, यहाँ लोग सड़कों पर बैठे होते हैं। ये जो आपको बेंचेस दिख रहे हैं, यहाँ लोग बैठे होते हैं, लेकिन स्थिति देख लीजिए किस तरह से बनी हुई है। सायरन की आवाज़ बीच बीच में आती है। हालांकि सड़कों पे लोग नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो रहते हैं वो छुप जाते हैं। लेकिन गाड़ियों की संख्या, मुंबई जिस तरह से हिंदुस्तान में हैपनिंग सिटी के तौर पे जाना जाता है, वहाँ की नाइट लाइफ भी देर तक होती है, गगनचुंबी इमारतें होती हैं, वो यहाँ हम लोग रुके हुए देख सकते हैं कितना सन्नाटा है। इस तरह की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी तेल अवीव में कि ऐसा होगा। हाँ, हमारे साथ हमारे पायलट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। योर गुड नेम? My name is Moshe. Moshe, this is happening city. Any time in your life have you seen such situation in Tel Aviv? No, this city is never stop all day long, 24/7. You have people, but now as you can see, it's very slow, and the people are staying at their home. War situation, yes. But it is on the center. You are from southern part of. You are from Ashkelon. आपको बता दें कि हमारे साथ मोशे जो हैं एश्केलॉन से हैं। एश्केलॉन से ये हमें पिक करते हैं तेल अवीव से, फिर हमें एश्केलॉन लेकर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं वो एश्केलॉन और दक्षिणी भाग में नहीं जाती। और ये देखिए एक बार फिर शहर आपको दिखा दें। मोशे बता रहे थे कि कभी ये शहर रुकती नहीं है, अभी रेंग रही है। रेंगना भी नहीं कहेंगे, स्लो कहना तो उचित नहीं होगा। मोशे ने स्लो कहा। All the time full. Yeah. All the time full. This street, Rothschild Street, all the time full of people, restaurant, pubs. This city is never stop. Tel Aviv is a very serious city. Yes. हमें ये भूमध्य सागर की तरफ भी ले जा रहे हैं। Are you taking us to Mediterranean Sea? Yeah, we will go and see the sea now. And you will see over there is a lot of restaurants, a lot of pubs that all the time are full. On the coastal line also there are a lot of pubs and restaurants, but all are empty. You see the street is empty now, yeah. देख सकते हैं, आपको बस दिखाने का मकसद ये है कि रात के 9 बजे तो इस तरह की कल्पना भी यहाँ कोई नहीं कर सकता था। जो शहर 4 बजे तक जो मस्ती में झूमता है, गाता है, वो यहाँ किस तरह की स्थिति है। जो गाड़ियाँ सड़कों पे आपको मुख्य मार्ग से, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं एश्केलॉन से, अभी वहाँ से आते वक्त सड़कों पे आपको गाड़ियाँ दौड़ती हुई देखेंगे, लेकिन आम दिनों में गाड़ियाँ बहुत होती हैं चलने। लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए, शहर के मध्य में हम लोग हैं, लेकिन हर जगह सन्नाटा। हम लगातार चल रहे हैं। अब तक हम लोग जितनी देर भी आपने हमें देखा है इस वीडियो में, आपने गौर किया होगा, तब से लेकर अब तक कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि आपको कोई भी भीड़ भाड़ समूह में लोग मस्ती करते नजर आए। हर एरिया में, हर जगह आपको सन्नाटा दिखेगा। पूरा का पूरा इजराइल घोस्ट सिटी के तौर पे तब्दील हो गया है। Raz, if you could please elaborate a little bit what exactly happened and how did these militants reach your locality and what all they did? First of all, they are not militants, they are terrorists. And Okay. second of all, my neighbors were not killed, they were brutally murdered by terrorists. As you mentioned, my community is very close to the border. So actually to where I live, the 6 armed terrorists reached at the first step of the attack as kind of a decoy for the whole massive attack. And they came with motorized parachutes, like paragliders. So Okay. they got above the border. 3 of them landed in 3 different locations in the community, carrying 6 fully armed, fully geared terrorists. That time was 6:40 in the morning. Since they landed, they started running through the community. As I said, they landed in 3 prearranged locations in 3 sites of the community and started marching in directions, walking door to door. Anybody who got in their face was murdered, and then they started entering house by house, slaughtering, butchering, murdering innocent individual. The youngest one was 17 and the oldest one was 85, in their houses, in their beds. In cruel act of barbarism that even after shooting, each one of the victims was shot in the head multiple times, up to a time it's very hard to even identify the bodies.
And that took place all day long, starting Saturday, 6:40 in the morning.